Kangana, hi, straight here. Russell from Bollywood Live. Kangana, first of all, absolutely the trailer is amazing. But there is a slight gripe also I have about this. Whenever we see such movies which are mounted on such a scale and it looks so slick, हम लोग सबसे पहले एक थॉट आता है इंडस्ट्री में भी और बाहर और ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ये बात चलती है तो बाहर ऑडियंस भी ये बात करती है इट्स लुकिंग लाइक हॉलीवुड इट्स लुकिंग लाइक दिस इसमें भी जब टीजर आया था लारा क्रॉफ्ट से कंपैरिजन हुए थे लाफ कीता किल बिल डोंट यू थिंक सो दैट वी आर developing our own efforts and our own films by constantly having Hollywood comparison China Korea they never did action movies आई एग्री क्योंकि अगर आप देखें जो एजेंट अग्नि है वो हमारा अपना एक होम ग्रोन कैरेक्टर है और जो भी इंटरपोल एजेंट है वो जिस तरह से रेजी सर ने पूरा उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया है शी इज़ वेरी पूरी फिल्म भोपाल में है मध्य प्रदेश में इंडियन पूरा उसमें टेरेन है गवर्नमेंट इंटरपोल सारा हम लोगों का बहुत ही रस्टिक दिखाया हुआ है सो obviously इसमें जैसे मैंने कहा कि the world is one village now, you know, one big place right now where everybody has that access to each other. तो अगर हम लोगों में वो international appeal आती है तो necessarily the benchmark should not be Hollywood. You know, we can make our own benchmarks and people before us have made such great films जिन लोग Hollywood लोग उनको benchmark बना के चलते हैं चाहे सत्यजीत रे हो चाहे कोई हो तो हम लोग भी अपना benchmark बना सकते हैं I agree. Hi, this is Ravi Gupta Kangna, here from Filmy Uh, Fever. I'm not Towards finished. Kangna, one more thing. We would like to know who has been your favorite female action hero, probably in Hindi cinema or someone else. Which one you have really loved? हिंदी सिनेमा में तो एक्चुअली किसी ने अभी किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है रेखा जी थी खून भरी मांग हेमा जी Oh अंधा yes, कानून of course, they've been great. They've been amazing for their times, and उन्होंने बहुत ही अच्छा जो आज हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं वो उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया हुआ है जो भी लड़कियों का स्थान है और जो भी एज अ लीडिंग लेडी हम लोग इंजॉय करते हैं प्रिविलेजेस वो उन्होंने हमें दिए हुए हैं Now our duty is to take it forward for the coming generation and take it notch higher जहाँ पे हमें leading lady के जैसे privileges ना मिलके we get privileges of a hero on the set. And Hi, final question, towards your one right, final question. once When you are at all these films mounted on such a big scale in the south, वो लोग सीधा just even before the release जैसे trailer आता है, even before that, वो लोग एक pan India film का announcement करते हैं कि ये pan India है और already release का market भी वो लोग ऐसे ही देखते हैं कि ये सारे territories में हम release करेंगे ये languages में. Dhaakad is the perfect example of that kind of pan India scale. Why aren't we also taking these kind of movies and propagating it as pan India before the release? We are dubbing it in Tamil and Telugu and Kannada. So we are of course going to take it to the rest of the country. And I think this debate about South and North and South in films यहाँ आ रही हैं और ये कर रही है, it's so unfortunate. You know, they have always got this stepmotherly treatment and that's why today it feels like a victory. It should have not been like this in the first place. You know, it should have not been like this, that we have not had a single hero from the South as a leading man in the Hindi film industry, as in like a successful one, the celebrated one. I've been talking about it, that how close-knit this circle is and how this operates. This is also an example of this, that how they don't allow outsiders. And now when they are coming to take their due, which is rightfully theirs, this country is theirs, and this is their due that they're taking. वो किसी की ये जो आप हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना कि वो यहाँ पे यहाँ की स्क्रीन्स ले रहे हैं किसी की टेरिटरी में, वो किसी की टेरिटरी में नहीं आ रही है, उन्हीं की ही स्क्रीन्स हैं, ये पूरा देश उनका है, वो भारतीय हैं. तो ये इस तरह की आप प्लीज़ इस तरह से उनको देखना बंद करें जिस तरह से यहाँ के लोगों की परसेप्शन जो यहाँ के माई बाप बन के बैठे हुए हैं ना उनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है और वो ये थप्पड़ डिजर्व करते हैं क्योंकि this was long due, this was pending for them and they will take their due and I am very happy that they are. Also, brother, Kangana, towards your right. This is Ravi Gupta here from Filmy Fever. Just a second, Kangana, I think Rajni, she was trying to say I'm something. just going to add, what's your name, buddy? What's your name? Russell, you know, film is an art form and it's universal. You know, so if it's looking in a certain way,
our films in the 70s used to look like this, where there was composition, there was lighting, and then something happened. So it's an art form. It could go anywhere in the world, and if somebody embraces it, it's beautiful. Kangana, towards your right, slight middle. This is Ravi Gupta here from Filmy Fever. रियल लाइफ में आप धाकड़ तो है ही हैं, बड़े पर्दे पर भी आप धाकड़ दिख रही है. आपने कहा कि हमारा खुद का बेंचमार्क होना चाहिए. आई थिंक यू हैव सेट अ बेंचमार्क. और बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी होपफुल है इस फिल्म के बाद, बेसिकली कुछ आप बताना चाहें. Like I said, this just अगर ये इस तरह की फिल्म बहुत बड़े पैमाने पे सफलता हासिल करती है, तो एक this will be beginning of new age, new era for the film industry. जैसे कि क्वीन के बाद हुआ था या डर्टी पिक्चर के बाद हुआ था. There came this wave of, और आज कोई भी जब हम भी यहाँ पे ये फिल्म कर रहे हैं, तो people don't see it as a female centric film. It is just a big scale action film. This is because we have incessantly worked on this. और अब अगर यही फिल्मों को जो है छोटे बजट और कमिंग ऑफ एज और नौजवान फिल्म से उठा के अगर हम मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं और उसको मेन स्ट्रीम बनाते हैं, बिग बजट इवेंट फेस्टिवल फिल्म्स, so it will be again a step ahead into that direction. So that's my hope, and I hope we achieve this. Kangana, you one more have question last to three Deepak questions. sir. Last three questions, Deepak please, sir, and the let's producer direct of the some film. questions towards the producers and directors as well. Please, I think we should restrict it to one question each. That will help. Yes, please. That's right. Can we just do that? I'm, And last I'm three Siraj questions. Syed. This question is to the director. I am Siraj Syed from filmfestivals.com. The question is that we have the state-of-the-art technology now available, and the fights and the chases and the spectacular effects that we see on the screen are a blend of the real thing and a lot of VFX and SFX. How much do you think has that reduced the risk element that actors have to go through? And what was it in your special case? Did you find it very, very dangerous in some situations? And how did you divide the real action and the VFX and sound effects? Well, the kind of action we've done in this film is very, very grounded, and it's very real. It's very different from what's happening in our country at the moment. So I was very clear I wanted to do action which is grounded and looks real. So very little CGI is going to be used. It's only for the muzzle flashes and stuff like that. But for the actors, they had to learn. They had to train, and I pushed them. So technology is there to help you, but if you want to be in front of the screen, you have to push yourself. Otherwise, you can't make an action movie. It's as simple as that. Hi, Deepak sir, this is Ravi Gupta here again. Thank you. Towards your right. आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा. हमने देखा है कि कुछ फ्रेंचाइज फिल्में होती, कुछ फ्रेंचाइज होती हैं जो 70 साल, 80 साल, 50 सालों से अभी भी सरवाइव कर रही है. उनकी कोई भी फिल्म अभी भी अगर सिनेमा घरों में आती है तो लोग टूट पड़ते हैं. तो लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी बॉलीवुड में, खासतौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, फ्रेंचाइज फिल्मों को लेकर उतना सीरियसनेस नहीं देखा जा रहा. उसका कोई अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो आप देखेंगे कि लोग जो है मायूस हो जाते हैं. आप कितने होपफुल हैं धाकड़ से? क्योंकि मुझे लगता है इसके अंदर एक फ्रेंचाइज बनने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, और दूसरी फ्रेंचाइज फिल्में भी आप कर रहे हैं. सो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी तैयारी हो चुकी है धाकड़ 2 की. Yes. Amazing. Yeah, Amazing. definitely. We are gonna do धाकड़ 2 very shortly. We'll announce the film also. And secondly, कि अगर पुरानी फिल्मों में अगर स्कोप है कि आज हम उसको रीमेक करके या उसका सीक्वल बना करके कर सकते हैं तो क्यों नहीं. It's all depend कि सब्जेक्ट कैसा है, आज की तारीख में अपील करेगी कि नहीं करेगी. So definitely. Deepak, will you be taking Kangana only also in Dhaakad 2? Yeah, definitely. She is only our franchise. Definitely, we have to take her. There's no other question. Last Because- question, Okay. please. Yeah. Okay, no, there's a ऐसी question for धाकड़ ना Kangana. है Hold ना on. कोई और होगी. Kangana, there are many heroines, I've spoken to recently. I don't remember their names, and they wanted to start with, action. You are defying them.
by doing an action role, you know, and this is killing. What message do you want to say that you are the beginner again for action roles? For me, like you mean I am the initiator of this Yes. into female. Yes. I am very privileged, I would say, and I'm honored to be the initiator of this movement. If this becomes something that will follow suit, and a lot of other girls will do this after me, I will be honored. And I think this is precisely what I would say, that all the hard work and all the sacrifices that I've made, all the fights I've had in the past, all the battles I have fought have been worth it if this becomes a movement like female-centric films in the industry. Was Kangana it very ji, tough? thank you so Was it much. very Thank you so tough? much. We are Was it running very- short on time. We need to wrap this up. Hello. I hope you guys understand. We do need to wrap this up. Hello. Okay, ask, Hello. ask, Hello. please. Yeah. Okay, let's take two more questions. Yeah. Okay. Hi, Kangana. Preeti here from First India Filmy. Trailer is amazing. So आपसे जानना चाहूँगी, आपकी लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, तो क्या आप मूवी अपनी लाइफ पे बनाना चाहेंगे, या फिर क्या किसको देखना चाहेंगे अपने लाइफ पे मूवी अगर बनती है आपकी तो? हेलो. हाँ. या. मेरी लाइफ काफ़ी ड्रामेटिक है, या. और अगर मेरी लाइफ पे मूवी बनती है, आई थिंक इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर, बट Yeah. पता नहीं कभी बनेगी, बिकॉज आई थिंक आई हैव अ लॉट टू अचीव. आप बताइए. हाय कंगना. Kangana ji, can we have this question from here, Yeah, please? Kangana ji. Yeah, please go ahead. Go ahead. No, just take that question. कंगना जी नमस्ते. रेखा खान नवभारत नमस्ते टाइम्स रेखा से। जी. सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी. बहुत ही Thank you. कमाल का ट्रेलर है. सबका काम बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं. Thank you. मेरा सवाल आपसे है कंगना जी कि अभी आपने कहा कि भूमिकाओं के मामले में, किरदार के मामले में आपने वो कहते हैं ना कि वो जंग ली जहाँ पर आप क्वीन, तनु वेड्स मनु, मणिकर्णिका, पंगा और अब धाकड़, इस तरह के रोल्स आप कर रही हैं और उसमें आप सफल भी हैं. लेकिन एक अरसे से, एक लंबे अरसे से हम देखते हैं कि अभिनेत्रियों को, हीरोइंस को एक पे पैरिटी को लेकर के, एक जो मिशन है, एक मेहनताना है, उसको लेकर के भी एक लड़ाई लगातार मतलब लड़ते रहनी पड़ रही है. आप ऐसा मत कहिए, मेरे प्रोड्यूसर बोलेंगे अच्छा बाकियों को नहीं मिल रहे पैसे. आपने इनडायरेक्टली मेरा आंसर कर दिया है, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि उस यहाँ पर इनके सामने मत बोलिए. इनके सामने तो बिहेव लाइक देखो मैं बेचारी लड़की, ये बोलेंगे अच्छा बाकियों को नहीं मिल रहे, तुम ही ले रही हो. नहीं, I am not underpaid. For sure I'm not underpaid. Today I can say proudly, and thanks to everybody who gives me, who makes me feel like I am valued and my work is valued. And I mean, thanks to Sohail, he's the one who's initiated this, and Deepak ji and all the men who have helped me through this journey. And today, yes, of course, there were times when I felt that why when I do the same work, why don't I get paid? But today at this stage in my life, I am not underpaid. क्या बात है. Are Last you question paid from more here, than the please. hero? We Kangana? have to Whoever end the gives Q&A. Kangana, Yeah, Kangana. just take this question and we have to Kangana. end the Q&A, please. Kangana, are you paid more than the hero because you are the hero of this film? I Kangana? think we've taken that question. Now let's just take. hello. कंगना जी. Yeah, please just take the question. हाय कंगना जी. कंगना जी, आपकी फिल्म में वायलेंस बहुत ही है, एंड लोगों को सिनेमा घरों में वायलेंस बहुत ही पसंद आते हैं. आई विश कि लोगों को वायलेंस बहुत ही पसंद आए. एंड लेकिन इन Thank दिनों you. हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत ही वायलेंस चल रहा है. कभी हनुमान चालीसा को लेकर, तो कभी लाउड स्पीकर को लेकर. अगर आप Hey, I don't think कंगना that's जी- an appropriate रुक question for जाइए the मैडम, evening. अभी तो मेरा नंबर आया, एक मिनट रुकिए. अगर आप हमारे स्टेट की सीएम होती, कंगना जी, अगर आप हमारे स्टेट की सीएम होती तो कैसे हैंडल करती आप ये? दैट्स इट. Yeah, can we like? ये देखा आपने अभी ट्रेलर? हाँ जी, देखा. वैसे ही. One last question, Kangana. In one of your posts. No, I'm not going to justify my posts here to you. No, I'm no. not answerable to you. What I write in my, check out my Instagram. I will write there again. अर्जुन, Thank एक you so आखिरी much, सवाल, ladies